सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज एक अनसॉल्व्ड वर्कशीट आपको दूंगा होमवर्क के लिए, क्वेश्चन के लिए। मैटर वेव से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ मैटर वेव, इसको आप कंप्लीट करने की कोशिश करें। नेक्स्ट, व्हाट इज़ डी ब्रोगली वेवलेंथ। नेक्स्ट, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज अ फंक्शन ऑफ मास एंड स्पीड। Next is a graph-based question on lambda versus mass, then question on lambda versus speed, then question on lambda versus momentum, then lambda versus 1 by p graph, then lambda is a function of mass and kinetic energy, then lambda versus mass graph and kinetic energy is constant, then lambda versus kinetic energy graph and mass is constant, then lambda versus 1 by root k graph, lambda versus 1 by root m graph, lambda versus 1 by k, lambda versus 1 by m, lambda versus root m graph. तो ये वेरियस पॉसिबल क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट एक वर्कशीट और है इसमें। अब कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे आपको एक कोई बॉडी दिया हुआ है, ब्लॉक दिया हुआ है जिसका मास 2 kg है, स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इसका मोमेंटम आप कैलकुलेट करें, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। सेकंड क्वेश्चन इज इसका काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करें। थर्ड, इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ आप कैलकुलेट करें। तो बेसिक से क्वेश्चन है बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चन में हमने वेक्टर बेस्ड क्वेश्चन एक दिया जिसमें मास है 4 kg और वेलोसिटी वेक्टर है 3i + 4j + 5k। तो इसमें आपको कैलकुलेट करना है सबसे पहले स्पीड, उसके बाद मोमेंटम, देन मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, देन काइनेटिक एनर्जी। तो ये इसमें आप सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक हमने इसमें वेरिएबल टाइम का क्वेश्चन डाल दिया जिसमें मास 2 kg दिया हुआ है किसी बॉडी का, उसका एक्स कोऑर्डिनेट है t² - 3t + 2 इन मीटर। तो आपको वेरियस क्वेश्चंस फाइंड करने हैं, जैसे एक्स का इनिशियल वैल्यू, फिर एक्स एट t = 2 सेकेंड, फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फिर इनिशियल वेलोसिटी, फिर इंस्टेंटेनियस मोमेंटम, फिर इनिशियल मोमेंटम, फिर काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फिर डी ब्रोगली वेवलेंथ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और फिर इनिशियल इसका जो वेवलेंथ है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो इस तरीके से डिफरेंट क्वेश्चंस इसमें हैं और उसको आप यूज़ कर सकते हैं टू एनालाइज योर वर्किंग। तो यहाँ पे मैं बताऊँ ऑप्टिमल फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वर्कशीट्स का, अनसॉल्व्ड वर्कशीट्स का, दिस इज जस्ट अ क्रॉस चेकिंग मैकेनिज्म ऑफ व्हाट यू हैव लर्नड। Because generally what happens is to solve a particular J-NEET question, the algorithms of your mind brain must be optimized for problem solving, must be optimized to get answers. And for that you need to work in a very, you can say that, very guided manner. You need to work on overall development of the mind brain system, and you must be capable to design the solution and getting the answer within the time limit. As in NEET, only 80 seconds are awarded for each question. There is a time of 1 hour and questions are 45, so 80 seconds for one question. For JEE Main there are 2 minutes, and for JEE Advanced there are, let's say, depends on that, but generally there are 3 to 4 minutes available depending on the number of questions. So if we count for 18 questions, then it sums out to be a bit more than 3 minutes. So 3 to 4 minutes we can take, but certainly it's a time bounded exam and you have to answer within the time limit, and you can perform in that time bounded manner if you have practiced yourself, you have become adaptive to finding the solutions within a desired time limit. Because when you will start solving a problem, then the first thing is you will be having a lot of thoughts, thinking process, ideas. But if you have not practiced to get the best solution within a time limit, then you will be trapped in overthinking or distraction, or you can say anxiety or depression of any other emotional conflict, but will be unable to find the answers. So the first thing is to optimize your mind brain system for getting answers of the questions asked in JEE. So the entire purpose behind optimal physics is to develop a system of working in which any student can start learning from the very base and can have fundamentals very strong, and is very is having the basic skills necessary to solve questions. Because thing here is that you need to work on yourself, you need to work on your mind brain system, you need to work on your thinking process to develop your algorithms so that you have at least the basic skills to process information and to process the solution of the problem. So if you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you and have a nice day.